Hi everyone, I welcome you all to this online lecture on diabetes mellitus. So let's start. So first of all, we'll be talking about the history. As we already know that the term diabetes mellitus, it has originated from the Greek word diabetes, and the word meant siphon. Siphon means referring to the excessive urination, and the Latin word mellitus meant the sweet taste, indicating the sweet tasting urine. Okay, so let us first try to understand what diabetes mellitus actually is. So, diabetes mellitus is a metabolic disorder that is characterized by abnormally elevated blood glucose levels. And these abnormally elevated blood glucose levels, they are known as hyperglycemia. Hyper means rise. Rise in the glucose level is known as the hyperglycemia. Okay. So, there are certain categories of the diabetes mellitus that includes the type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, the one which is popularly known as MODY, maturity onset diabetes of the young, and gestational diabetes, neonatal diabetes, in the newborn baby up to 6 months, and then secondary diabetes, which is due to endocrine disorders. Okay. So let us talk about the subtypes and presentation of the diabetes mellitus. Mm, the type 1 diabetes mellitus is caused by autoimmune destruction of pancreatic beta cells that leads to the absolute insulin deficiency. Typically, it is present in the childhood or adolescence. इसके सिम्टम्स होंगे आपके पॉलीयूरिया, बार बार मिक्चुरेशन, बार बार यूरिनेशन की डिजायर, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस एंड फटीग. ठीक है जी. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इट विल बी रिजल्टिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस. अभी डिटेल में बाद में समझेंगे कि इसमें इंसुलिन resistance हो जाती है and relatively insulin deficiency. So it is very much common in middle-aged and older adults and strongly associated with obesity, sedentary lifestyle, and poor dietary habits. So it may be asymptomatic initially, but it can be detected during the routine screening. Okay. There are certain other subtypes also, such as MODY, monogenic form, which presents at young age with mild hyperglycemia. Gestational diabetes, it is diagnosed during the pregnancy, and later on it increases the risk of diabetes. Also, the neonatal diabetes, it appear in the first 6 months of life and it is often genetic. The secondary diabetes, it appears due to the certain conditions like Cushing syndrome, acromegaly, or glucocorticoid therapy. So let us talk about the pathophysiology of diabetes mellitus. We will be talking about the unhealthy lifestyle. Unhealthy lifestyle like excessive calorie intake, like the excessive calorie intake and less physical activity. Physical activity, it leads to abdominal obesity. It leads to the abdominal obesity. So when it leads to be the abdominal obesity, which is the risk factor of the insulin sensitivity. Okay, so visceral fat. Whenever there is visceral fat, it is going to increase the visceral fat is going to increase the inflammatory mediators. Inflammatory mediators. सो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे? ठीक है, ये इंपेयर कर देंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी को. ठीक है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी कॉज इनसेंसिटिविटी कॉज करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे? लिवर में ये इंक्रीज्ड ग्लूकोज प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. लिवर में इंक्रीज्ड ग्लूकोज प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. मोर ओवर मसल्स में reduced glucose uptake in muscles, they lead to reduced
glucose uptake. Okay, they will be leading to reduced glucose uptake in the muscles. Okay, so secondly, if we talk about the genetics की, इसकी genetics की अगर हम बात करते हैं तो genetics का भी बहुत important role है. ठीक है, genetics का क्या role है हम समझने की कोशिश करेंगे. That beta cell of the pancreas, they increase the secretion of insulin. Okay, so कई बार क्या है, when there is genetic predisposition, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है. जब भी बीटा सेल का डिसफंक्शन होगा, ठीक है जी, बीटा सेल का डिसफंक्शन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है. ऑल्सो मूविंग ऑन टू द इंक्रीटिन केमिकल्स. सो इंक्रीटिंग्स ऐसे हॉर्मोन्स हैं दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द गट. ओके, कहां से रिलीज होते हैं? गट से रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू food intake, in response to the food intake. Okay, so these hormones are like GLP-1. These hormones are like GIP. Okay, now what they are doing, these hormones, they are stimulating the pancreas to secrete insulin, to secrete insulin. Okay, so they just stimulate the pancreas to secrete the insulin and suppress the glucagon. So when there is impaired response in this incretin chemicals, okay, when there is impaired response in these incretin chemicals, तो आपका क्या होगा? इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगा, इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, क्योंकि ये गट में प्रेजेंट होते हैं, ये इंक्रीटिन केमिकल्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं. ओके, तो इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी. ठीक है, सो व्हेन देयर विल बी इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन, तो आपकी हाइपरग्लाइसीमिया होना तय है. एंड व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया इज increased blood sugar. It is increased blood sugar. Okay, blood sugar levels, you can say. Okay, so next, moving on to the diabetes mellitus type 1 and type 2. इसको समझने की कोशिश करेंगे कि type 1 diabetes mellitus क्या होती है और type 2 diabetes mellitus क्या होती है. ओके, सो अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं, ये आपके पैंक्रियाज हैं. अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं, दीज आर योर पैंक्रियाज. और आपको पता है पैंक्रियाज का काम क्या है? पैंक्रियाज का काम है इंसुलिन की सिक्रीशन करना. सो इफ अ पर्सन इज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब उस पर्सन को कोई भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन इज बीइंग सिक्रीटेड इन नॉर्मल क्वांटिटी, तो इंसुलिन क्या करेगी? अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज को अंदर सेल में लेके आएगी. सो व्हाट इज इंसुलिन डूइंग? इंसुलिन हेल्प्स द ग्लूकोज enter the cells by binding to the receptors of the insulin which are present on the cell surface. So this allows the glucose to be used for energy production or stored. So normal blood sugar levels are maintained in case of the healthy individual. क्यों? क्योंकि इंसुलिन अपना प्रॉपर काम कर रही है. Now let's talk about the type 1 diabetes mellitus. अब type 1 diabetes mellitus में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएंगे, पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएंगे. So when pancreas fails to produce insulin due to certain autoimmune destruction of insulin producing beta cells, so without insulin the glucose will not enter into the cell, and what will happen? The blood glucose levels, they will rise sharply and they will cause the hyperglycemia. That means they will cause the diabetes mellitus. They will cause the diabetes mellitus. Okay, so this is the type 1
diabetes mellitus. Okay, so this is also known as इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। व्हाई? क्योंकि इसको इंसुलिन से क्योर किया जा सकता है ना। अब इंसुलिन नहीं बन रही है तो इंसुलिन को हम आर्टिफिशियली क्या ओरली एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। हमारी जो प्रोटीएजेस हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, हम इसके इंजेक्शंस देते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब इसमें इंसुलिन तो बन रही है प्रॉपर, इंसुलिन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास एंड समटाइम्स इवन इन एक्सेस, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड में रिटेन रह रहा होता है, तो पैंक्रियास को नहीं पता कि क्या चक्कर है, पैंक्रियास जोरों से इंसुलिन बनाने में लगे रहते हैं। सो बट द बॉडी सेल्स बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, या तो आपके इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक्ड होंगे, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं that they do not respond to the इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली ये रिस्पॉन्स आपका नहीं देते। ठीक है, एंड ग्लूकोज अपटेक बाय सेल इज इम्पेयर्ड, ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, लीडिंग टू द एलिवेटेड ब्लड शुगर। सो अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, दैट इंसुलिन इज प्रेजेंट बट द सेल्स इग्नोर इट बिकॉज the cell cannot bind to the insulin, इसके रिसेप्टर्स या तो कम है, या तो फिर ये किसी और चीज से ब्लॉक्ड है, इंसुलिन बाइंड नहीं कर रही है, as a result of which the glucose it stays in the blood and causes the chronic hyperglycemia itself diabetes. Okay, so what are the symptoms? The symptoms are polyuria, बार बार मिक्सचुरेशन की डिजायर, यूरिन पास करने की डिजायर, और होता भी है बार बार, बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट इसमें इंक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार प्यास लगती है ऐसे लोगों को। एक्सेसिव हंगर, पॉलीफेजिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। कई बार बहुत से केसेस में देखा गया है कि वेट लॉस हो रहा है बट वेट लॉस का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। विजन इज ब्लरी, फटीग हो गई है, एंड recurrent yeast infections also due to the sugar present in the urine. Numbness on burning in the hands and feet, जो झिलमिली सी चढ़ती है, उस तरीके की numbness and burning sensation आपके hands और feet में experience करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। एंड मेनी पीपल हैव नो सिम्टम्स इनिशियली, बट कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम्स इनिशियली नहीं आता है। तो डायबिटीज में बी फाउंड ड्यूरिंग द रूटीन टेस्ट। अगर हम इसके रूटीन टेस्ट की बात करते हैं तो एक तो हम इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, HB1AC, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, यूजुअली हीमोग्लोबिन के साथ में शुगर का एडिशन हो जाता है नॉन एंजाइमेटिकली। ये बहुत ज्यादा रिलायबल टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इससे हम 3 मंथ्स की शुगर तक भी एलिवेशन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, और एक बार अगर आरबीसी की ग्लाइकोसाइलेशन हो गई, ग्लाइकोसाइलेशन हो गई, या फिर एक बार आरबीसी की ग्लाइकेशन हो गई, तो रिवर्स नहीं है। जब तक वो आरबीसी का लाइफ स्पैन है तब तक वो ग्लूकोज को अपने साथ लेके चलता है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये भी किया जाता है, ब्लड सैंपल बिफोर 2 आवर्स आफ्टर ड्रिंकिंग 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। इसको हम डिटेल में भी बाद में समझेंगे। ओके, देन रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसकी अपनी अलग रेंज होगी। देन ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, सो अगेन ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसके बाद किया जाता है अगर एबनॉर्मल है तो। ओके, देन ऑटो एंटीबॉडीज टेस्टिंग, ये क्यों होता है? सो दैट टू कंफर्म द टाइप 1 डायबिटीज बाय डिटेक्टिंग सर्टेन इम्यून मार्कर्स, एंड जेनेटिक टेस्टिंग। कई बार जो है कि मोडी की जो जीन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। ओके, सो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज? सी, प्री डायबिटीज इज अ कंडीशन जब
आपको डायबिटीज का रिस्क है, यू आर एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज, सो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। सो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डीएल, डीएल डेसीलीटर 100 mg पर डीएल से कम है, then the condition is normal. If it is between 100 to 125 mg per dl, then it is pre-diabetics. And if it is, equal to or greater than 126 mg per dl, it is a case of diabetes. Okay, यहाँ पे एक चीज है, there are certain labs, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सर्टन प्रोटोकॉल्स, जिन्होंने अपनी रेंज स्टैंडर्डाइज की हुई है प्रोटोकॉल के हिसाब से, सो यस द रेंज में वेरी, बट यूनिवर्सली इसी के आसपास रेंज आपकी होगी। देन इज द HB1AC, इट इज द हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको हम कह रहे थे कि 3 साल की शुगर है ना, कि 3 साल की शुगर की जब हम बात कर रहे थे, देन वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। सो द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन अगर 5%, 5.7% तक है तो नॉर्मल है, तो कोई डायबिटीज नहीं है ना। अगर ये 5.7% से 6.4% तक है, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, आपको डायबिटीज का रिस्क है। एंड नाउ इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन 6.5%, तो आपको डायबिटीज है। एंड डू आर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इफ इट इज लेस देन 140 mg per dl, then it's normal. If it is between 140 to 199 mg per dl, then the patient is suffering from pre-diabetes, and if it is greater or equal than 200 mg per dl, तो patient को diabetes है। and random glucose के symptoms normal में हम कुछ कह नहीं सकते, but diabetes में है ना, normal में तो random blood glucose sample depend करता है आपने कितना खाया है ना, आपका dietary intake क्या है। but in case of diabetes, it should be, you know, if it is equal to or greater than 200 mg per dl, that means the patient is suffering from diabetes. Okay, so these are the normal ranges, and जो आपके डिसाइड करती हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कब होगा और आपका डायबिटीज कब होगा। सो ऑल्दो मैंने आपको अभी बताया that different labs, they make their own different ranges, they and the ranges are standardized and according to a particular protocol। बहुत कम फर्क होता है, 10 से 20 mg per dl का फर्क देखने को मिल सकता है। So that's all for today. So in case of any queries, please let me know. And if you want a video on any other topic, you can tell me. And thank you so much.